हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री रूट्स। हमारा आज का टॉपिक है फर्टिलाइजर्स। इस वीडियो में हम फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको MCQs के फॉर्म में डिस्कस करेंगे और जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको भी साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन लैब एंड इज अवेलेबल इन pellet फॉर्म? ए अमोनियम सल्फेट, बी यूरिया, सी कैल्शियम नाइट्रेट एंड डी कैल्शियम साइनाइड। तो इन सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में से वो वाला नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जिसे हम लैब में प्रोड्यूस करते हैं और pellet फॉर्म में होता है, उसका करेक्ट आंसर है बी यूरिया। अगर हम यूरिया के बारे में बात करते हैं, इसे जनरली हम एसिडिक सॉइल में यूज़ करते हैं और इसमें अबाउट 46% नाइट्रोजन होता है। अगर हम अमोनियम सल्फेट के बारे में बात करते हैं तो जो ये अमोनियम सल्फेट होता है इसमें 21% नाइट्रोजन होता है एंड 25% सल्फर होता है और इसे हम वाटर लॉग्ड या फिर हम बोल सकते हैं कि एल्कली कंडीशंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट को हम किसान खाद के नाम से भी जानते हैं और इसमें हमारे पास 25% नाइट्रोजन होता है। अगर हम कैल्शियम साइनाइड के बारे में बात करते हैं, इसमें अबाउट 21% नाइट्रोजन होता है और इसे भी हम एल्कली सॉइल में यूज़ करते हैं। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारे पास और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो चुकी है कि जो यूरिया होता है वो pellet फॉर्म में होता है, एसिडिक सॉइल में होता है एंड 46% नाइट्रोजन होता है, जबकि अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन, कैल्शियम नाइट्रेट में 25% नाइट्रोजन एंड कैल्शियम साइनाइड में 21% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किसान खाद? A is ammonium nitrate, B is nano urea, C is calcium ammonium nitrate and D is ammonium chloride। तो किसान खाद किसे कहते हैं? किसान खाद कैन दैट इज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो उसे कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। जो अगर हम अमोनियम नाइट्रेट के बारे में बात करते हैं तो जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर होता है जिसमें 33% नाइट्रोजन होता है और इसको हम एसिडिक सॉइल में यूज़ करते हैं। अगर हम नैनो यूरिया इसके बारे में बात करते हैं तो नैनो यूरिया में 4% नाइट्रोजन जो है होता है। अगर हम अमोनियम क्लोराइड के बारे में बात करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है उसमें 26% नाइट्रोजन होता है और इसे भी हम एसिडिक सॉइल में यूज़ करते हैं। अगर हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को फिर से रिकॉल करेंगे तो हम यहाँ से पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे पास एल्कली कंडीशन के बारे में बोला गया है तो एल्कली में हम किस किस को यूज़ करेंगे? हम अमोनियम सल्फेट को यूज़ करेंगे, कैल्शियम साइनाइड को यूज़ करेंगे और अगर हमारे पास एसिडिक कंडीशंस के बारे में बोला गया है तो एसिडिक कंडीशंस में आप किन किन को यूज़ करेंगे? एसिडिक कंडीशंस में हम यूरिया को यूज़ करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ करेंगे, इसके अलावा हम अमोनियम क्लोराइड को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमाइड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन? ए अमोनियम क्लोराइड, बी यूरिया, सी थायोयूरिया एंड डी बोथ बी एंड सी। तो इनमें से अमाइड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर होगा डी बोथ बी एंड सी। यूरिया जो होता है वो भी एक अमाइड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है जिसमें कितना नाइट्रोजन होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। अगर हम थायोयूरिया के बारे में बात करते हैं तो थायोयूरिया जो होता है वो भी अमाइड सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है और इसमें कितना नाइट्रोजन होता है? 37% नाइट्रोजन होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4th, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एसिडिक सॉइल? ए इज एनहाइड्रस अमोनिया, बी इज अमोनियम सल्फेट, सी इज कैल्शियम साइनाइड एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं और अगर इन सारे में से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा ए एनहाइड्रस अमोनिया। इसे हम एसिडिक सॉइल में यूज़ करते हैं। अमोनियम सल्फेट हो गया या फिर कैल्शियम साइनाइड हो गया, इन दोनों को हम एल्कली सॉइल में यूज़ करते हैं। So the correct option is option number A, anhydrous ammonia. It is used in acidic soil. Question number 5 is, which of the following phosphatic fertilizer is citrate and water insoluble? A is rock phosphate, B is basic slag, C is MAP and D is DAP. तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा A, that is rock phosphate. ये citrate and water insoluble होता है। इसके अलावा अगर हमारे पास ऑप्शन में बोन मील होता वो भी करेक्ट आंसर होता है क्योंकि रॉक फॉस्फेट और बोन मील जो है वो दोनों ही सिट्रेट एंड वाटर इनसॉल्युबल होता है। अगर हम MAP की बात करते हैं, DAP की बात करते हैं, ये वाटर सॉल्युबल होता है। और अगर हम बेसिक स्लैग के बारे में बात करते हैं तो फिर ये सिट्रल सॉल्युबल होता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि सिट्रेट एंड वाटर में इनसॉल्युबल है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है क्या होगा या फिर करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा? ए, दैट इज रॉक फॉस्फेट। नेक्स्ट इज अमाउंट ऑफ सल्फर इन SSP। ए 18%, बी 12%, सी 16%, डी 19%। जो SSP हमारे पास होता है उसमें जनरली 16% फॉस्फोरस होता है, 12% सल्फर होता है
एंड 18% कैल्शियम होता है। तो इसमें हमारे पास क्या पूछा गया, सल्फर के बारे में पूछा गया कि एसएसपी में कितना सल्फर होता है। तो एसएसपी में कितना सल्फर होता है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 12%। Question number 7 is, which of the following phosphatic fertilizer is used in plantation crops in acidic soil? A. Ammonium phosphate, B. SSP, that is single superphosphate, C is rock phosphate, and D is basic slag. So the correct option is option number C, that is rock phosphate. It is used in plantation crops and in acidic soils. If we talk about ammonium phosphate, then ammonium phosphate comprises of about 20% of phosphorus. If we talk about SSP, SSP consists of 16% phosphorus, 12% sulfur, and 18% calcium. Then we have rock phosphate. Rock phosphate consists of about 20 to 40% of phosphorus, and then we have basic slag. Basic slag consists of about 14 to 18% phosphorus. So the correct option is rock phosphate, which is generally used in plantation crops in acidic soils. Next is amount of phosphorus in DAP, that is diammonium phosphate, in granular form is 46%, 16%, 20%, and 44%. Generally this DAP, it is in two forms. One is the granular form and the other is the liquid form. So in liquid form 16% phosphorus is present, and in granular form 46% phosphorus is present. So the correct option would be 8th ka A, that is 46% phosphorus in DAP, that too in granular form. Next is potassium fertilizer used in heavy soil in acidic condition is NOP, that is potassium nitrate, SOP, that is potassium sulfate, MOP, that is potassium chloride, and DSP. This DSP, it is a phosphoric fertilizer, whereas NOP, SOP, and MOP, they are potassic fertilizers. So the correct answer of this question would be that which fertilizer is used in heavy soils in acidic condition. That would be MOP, which is potassium chloride, KCl. It comprises of about 60% of potassium. Question number 10. Which of the following nitrogen fertilizer has highest hygroscopicity? A is CAN, calcium ammonium nitrate, B is urea, C is ammonium nitrate, and D is ammonium sulfate. So if we have to arrange them on the basis of their hygrosity, it would be, first is ammonium nitrate, which is highly hygroscopic. Next is urea. Next is ammonium sulfate, and at last we have CAN. So the correct answer would be ammonium nitrate, that is option number C. Now this CAN, it is subjective to लीचिंग, मतलब सबसे ज़्यादा लीचिंग जो है किसमें होती है, वो कैन में होती है. अगर हम अमोनियम नाइट्रेट जो है उसके बारे में ही हम बात करते हैं, ये एक्सप्लोसिव फर्टिलाइजर भी होता है. Next is, what is the amount of nitrogen in thiourea? 46%, 37%, 32%, and 30%. So if we talk about thiourea, then thiourea, it comprises of about 37% nitrogen, which is option number B. Next is, which of the following is odorless pungent nitrogen fertilizer with highest equivalent acidity? A. Ammonium nitrate, B. Anhydrous ammonia, C. Ammonium chloride, and D. Calcium cyanide. The correct answer would be B. Anhydrous ammonia. Anhydrous ammonia, it has an equivalent acidity of about 148. And if you talk about the fertilizer which has the lowest equivalent acidity, it would be ammonium nitrate. It has an equivalent acidity of about 60. Next is, nitrate fertilizers are applied in A. Reduced zone of the soil, B. Oxidized zone of the soil, C. Reduced and oxidized zone of the soil, and D. None of the above. Generally nitrogen fertilizers, they are either in the form of nitrate or they would be either in the form of ammonia. These nitrate fertilizers, they are applied in the oxidized zone, whereas these ammonia fertilizers, they are applied on the reduced zone. So the correct answer of this question would be that nitrogen fertilizers, they are applied in the oxidized zone of the soil. Next is, application of ammonia along with irrigation water is called as what? If we apply ammonia along with irrigation water, it is known as what? Fertigation, nitrification, nitrogation, or irrigation. The correct answer of this question would be C, that is nitrogation. If we talk about nitrification, then what is nitrification? When we apply ammonia directly in the field, it is referred to as
nitrification, whereas the application of ammonia along with irrigation water, it is referred to as nitrogation, and then fertilizers with irrigation water is called as a fertigation. Next is, which of the following is a low analysis fertilizer? Ammonium sulfate, SSP, ammonium nitrate, or urea. So we have to know first that what is a low analysis fertilizer. We can say that any fertilizer which has either N, either P, or either K in a concentration of less than 25, it is generally referred to as a low analysis fertilizer. And here we have to choose a low analysis fertilizer. If you talk about ammonium sulfate, then ammonium sulfate, it comprises of about 21% nitrogen. If you talk about SSP, then SSP, it comprises of about 16% phosphorus. And if you talk about ammonium nitrate, then ammonium nitrate, it comprises of about 33% of nitrogen. And if we talk about urea, then urea consists of about 46% nitrogen. So we have already studied that what would be a low analysis fertilizer. A low analysis fertilizer would be one which has either N, either P, or either K in less than 25 concentration. So we can say that ammonium sulfate, it is a low analysis fertilizer because it has 21% nitrogen. If we talk about SSP, it is also a low analysis fertilizer because it comprises of 16% of phosphorus. Ammonium nitrate, it is a high analysis fertilizer. I'll write here high analysis fertilizer. If we talk about urea, it has 46% nitrogen. It is also a high analysis fertilizer. So the correct option, one more option has to be added, that both A and B. So ammonium sulfate, it is a low analysis fertilizer. It has 21% nitrogen, and SSP, it has 16% phosphorus. So it is also a low analysis fertilizer. Next is FMRI is located where. This FMRI, it is generally located in either A, Faridabad, B, Ahmedabad, C, Surat, or D, Nagpur. The correct option is A, Faridabad. Next is, which of the following is a primary nutrient? We have N, we have calcium, we have magnesium, and we have carbon. So we have to find out the primary nutrient. If we talk about the macronutrients, you have to know this, that macronutrients, they are total 9 in number. We have calcium, magnesium, sulfur, we have NPK, and we have CHO. Amongst these, NPK, it is referred to as a primary nutrient, whereas this calcium, magnesium, sulfur, and this CHO, they are secondary nutrients. So here in the question, primary nutrient has been asked. So the correct option would be option number A, that is nitrogen. Then you have to arrange the elements on the increasing order of their buffering. Okay, first is nitrogen, calcium, magnesium, phosphorus, potassium, and sulfur. B is NK, calcium, magnesium, phosphorus, sulfur. C is NK, calcium, magnesium, sulfur, phosphorus. D is NPK, calcium, magnesium, and sulfur. So you have to find out the correct option. The correct option would be option number B. First we have nitrogen, then we have potassium, then we have calcium, then we have magnesium, then we have phosphorus, and at the last we have sulfur. Next is question number 19. Indian Journal of Fertilizer is published by A. Fertilizer Association of India, B. Journal of Plant Nutrition and Fertilizers, C. Biology and Fertility of Soils, D. Annual Review of Nutrition. अगर हम इंडियन जर्नल ऑफ फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं, इट इज़ पब्लिश्ड बाय ऑप्शन नंबर ए, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और जो ये जर्नल होता है इसे मंथली पब्लिश किया जाता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज एक्सप्लोजिव इन नेचर? ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. ए. अमोनियम पॉलीफॉस्फेट, बी. कैल्शियम साइनाइड, सी. अमोनियम नाइट्रेट, एंड डी. पोटेशियम नाइट्रेट. इसमें से करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम नाइट्रेट. ये जनरली एक्सप्लोजिव इन नेचर होता है. तो आज की वीडियो में हमने 20 MCQs डिस्कस किए हैं फर्टिलाइजर्स से रिलेटेड. इन MCQs को डिस्कस करते हुए हमने उससे रिलेटेड और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको भी साथ ही साथ डिस्कस किया है. तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.